criteria for evaluation, है ना? So what is the criteria for evaluation? तो पहले वो समझ लो एक बार ना. What exactly the assessors are looking for. ठीक है. सो ऑर्डर में देखते हैं. दिस इज असेसर शीट फॉर पीपीटी जॉटिंग डाउन टू जॉट डाउन द डिटेल्स. ठीक है. तो पहले सबसे पहले देखते हैं. देखो, इंडिविजुअल नरेशन एंड कंटेंट्स. ठीक है. इंडिविजुअल नरेशन, कंटेंट्स, मैनर ऑफ एक्सप्रेशन. ठीक है. सो कंटेंट्स इज बेसिकली आपकी बुद्धि से आएगा, नॉलेज का पार्ट है, और इफेक्टिव इंटेलिजेंस का पार्ट है. ठीक है. आपकी समझदारी. इंडिविजुअल नरेशन इज मोर अबाउट प्रैक्टिस. ठीक है. कम्युनिकेशन स्किल्स. फाइन. मैनर ऑफ एक्सप्रेशन इज अगेन कम्युनिकेशन स्किल्स. ठीक है. सो सबसे पहली चीज तो आप अच्छे होने चाहिए इन चीजों में. ठीक है. ओनली अ पर्सन हु इज गुड एट व्हाट ही डज कैन लीड इन फौज. बिकॉज फौज का क्या बेसिक आइडिया होता है, दैट यू हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल. ठीक है. सो ये चीज ध्यान रखनी होगी. तो सबसे पहले कुछ नहीं समझ में आ रहा ना सर, नरेशन बेकार हो रहा है, भाई पहले स्टोरी राइटिंग पे ध्यान दो. ठीक है. स्टोरीज अच्छी निकलेंगी, बाकी सब कुछ अच्छा होगा. वंस यूर कॉन्फिडेंट विद योर ईच एंड एवरी पार्ट, उसके बाद ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट्स इनटू हायर कॉन्फिडेंस. ठीक है. देन वी कम टू डिस्कशन स्टेज. कंटेंट्स, फॉर्मनेस ऑफ ओन व्यूज. ठीक है. फॉर्मनेस इज बेसिकली हाउ गलिबल यू आर. ठीक है. सामने वाला बोल रहा है 3 नहीं 4 बंदे थे. ठीक है. सो आप लाइक यू नो, अब इस पे ना बड़ा एक, दिस इज अ वेरी फाइन थिंग. इट्स अ वेरी फाइन लाइन दैट यू हैव टू ट्रेड. ठीक है. यू हैव टू सी वहां पे फैक्चुअल कंसिडरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है. हाउ मेनी पीपल वर देयर, जैसे जस्ट फॉर एन एग्जांपल, हाउ मेनी पीपल वर देयर. सो फैक्चुअल पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से यू हैव टू कन्विंस अदर्स. ठीक है. एंड यू डू नॉट ऑल्सो हैव टू बी एट द सेम टाइम वेरी ऑब्नॉक्शियस. कुछ लोग होते हैं 5 बंदे ही थे. ठीक है. सो यू ऑल्सो हैव टू फाइंड मिडिल ग्राउंड. ठीक है. सो देर you can always say that, gentlemen, although I feel that there were 5 people, but for the group, to take the group forward, let's go with 4. ठीक है. सो यहाँ पे आप ये भी कह रहे हैं कि मैं भी सही हूँ एंड ग्रुप भी सही है. ठीक है. सो यू हैव टू मेक दैट कॉल इन सम मैनर. फाइन. कि आपका पर्सपेक्टिव ये नहीं होना चाहिए कोई बोले कि भाई तू गलत है और आप मान जाओ. ठीक है. और जब आप गलत नहीं हो, खासकर, फाइन, ऐसा नहीं है कि आप गलत हो और तब भी गलती नहीं मान रहे, वो दिक्कत होती है. ठीक है. सो वो होता है शैलो लेवल ऑफ ऑब्जर्वेशन से. जब आप पिक्चर पे देख रहे हो, रिपीटर्स के साथ बहुत कॉमनली होता है, और खासकर वो जो थोड़ा सा ना ज्यादा कुछ टाइम से स्क्रीन आउट या कॉन्फ्रेंस आउट देखते आ रहे हैं ना, उनके साथ ये ज्यादा होता है, अड़ियल हो जाते हैं. ठीक है. देर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग फर्म एंड बीइंग जिद्दी. ठीक है. बीइंग फर्म इज बेसिकली कि मैं गलत नहीं हूं, आप भी गलत नहीं हो. ठीक है. आप भी सही हो सकते हो, बट मैं भी सही हूँ. ठीक है. फॉर्मनेस इज, और बीइंग जिद्दी इज कि मैं ही सही हूँ खाली. समझ रहे हो मेरी बात? ओके. मूविंग ऑन. मैनर ऑफ एक्सप्रेसिंग ओन ओन व्यूज. ठीक है. सो दिस आल्सो कम्स डाउन टू कम्युनिकेशन स्किल्स. ठीक है. एक बंदा बोलता है, जेंटलमैन, वी शुड नॉट टॉक ओवर ईच अदर, और लेट्स स्पीक वन बाय वन. देयर इज अनदर पर्सन. देखो, कम्युनिकेशन स्किल्स इज ऑल अबाउट बीइंग यूनिक. ठीक है. आप अटेंशन तब कॉल कर पाएंगे जब आपके वोकैबुलरी भी यूनिक हो. ठीक है. इफ इट वर अप टू मी, आई वुड गो विद, जेंटलमैन, काइंडली मेंटेन द डेकोरम ऑफ द ग्रुप डिस्कशन. ठीक है. डेकोरम इज अ लेसर यूज्ड वर्ड, ऑब्वियसली, राइट? We are not acting like officers here. Let's try and arrive at the group consensus as it was the task given to us by the assessors. ठीक है. और by the GTO sir. Fine. Then we come to empathy. See, empathy. अब देखो, 4 चीजें हमने देखी अभी तक. 4 में से 3 में से, सॉरी, 4 में से तीसरी जो, सॉरी, चौथी जो आ रही है, दैट इज एम्पैथी. एम्पैथी इज बेसिकली अंडरस्टैंडिंग योर टीममेट्स. And now from here on, everything will be related to your team. ठीक है. So first 3 things you have to work on yourself, and rest of the things you have to be effective in the team. This comes through exposure. गलती सब करते हैं. ठीक है.
सो एम्पैथी, अंडरस्टैंड अदर्स पर्सपेक्टिव, दूसरों की नीड भी समझनी होती है, ठीक है। एक बंदा जो खाली डोमिनेट कर रहा है उसको टैक्टफुली आपने अवॉइड करना है, ठीक है। सो बिकॉज ही हैज, अगर आप उस पर लैश आउट करने लग जाएंगे ना तो फिर दिक्कत होगी, बिकॉज इट विल आल्सो वेस्ट योर एनर्जी एंड यू आल्सो हैव टू अंडरस्टैंड दैट ही इज कमिंग फ्रॉम अ deep rejection state of mind, so there has to be a certain level of empathy, ठीक है। You have to encourage and involve others, देख रहे हो ये, ठीक है। So this is PPDT I'm talking about, fine। You have to respond, right? Response and reactions of others, that आप जो अभी तक कर रहे हो उसके बेसिस पे सामने वाला कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, आपके टीम मेंबर्स कैसे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। देन वी हैव सम टैक्ट इन इंटरेक्शन, हाउ टैक्टफुल यू आर, फाइन। एक बंदा बोलता है कि अबे तू चुप कर जा, ठीक है। दूसरा बंदा बोल रहा है जेंटलमैन अभी बोलना सही नहीं होगा, ठीक है। सो समझ रहे हो डिफरेंस, डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट होता है। सो टैक्टफुलनेस इज दिस, राइट। एक तो आप मुंह पे अखड़ इंसान की तरह बोल रहे हैं, ठीक है, और दूसरा आप सजेस्टिव लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो मैं हमेशा बोलता हूँ पीपीडीटी में यूज सजेस्टिव लैंग्वेज, ठीक है। जेंटलमैन, डू यू थिंक दिस इज द राइट कोर्स ऑफ एक्शन, सजेस्टिव फॉर्म में, ठीक है। बी लाउड इनफ, बी कन्विंसिंग इनफ, right? Then comes to impact on others and finally the special remarks. So these things they hold true in the GD also, ठीक है। अब ये तो PPDT की वो है, right? GD के थोड़े slightly different instructions होते हैं। गोल क्या होता है, डिस्कस एवरीथिंग, डिस्कस द लीड्स, ठीक है। नो कॉमन कंसेंसस नीड्स टू बी अचीव्ड, ठीक है। मतलब एब्सोल्युटली नेसेसरी नहीं है कॉमन कंसेंसस वो करना, बट अगर एक अच्छा लीडर जो होगा ना वो पूरी टीम को एक पॉइंट पे लेके आने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये गोल होगा, फाइन। एंड अच्छा लीडर एक देखो यार, जब भी व्हेनेवर यू वांट टू लीड प्रॉपर्ली, फाइन, एंड यू हैव टू लीड थ्रू एग्जांपल, आपको थोड़ा सा ना कूल कूल हेडेडनेस डिस्प्ले करनी पड़ेगी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो तीन चीजें होती हैं जो कि मैं कहता हूं, इट्स ऑलवेज बी नो डू, फाइन। याद रखना है इसको, बहुत काम देगा, बी नो एंड डू, ठीक है। व्हाट इज बी, यू हैव टू बी मॉरल, ठीक है। यू हैव टू बी अपराइट, यू हैव टू बी हेल्पफुल टू अदर्स, यू हैव टू बी लॉयल, ड्यूटीफुल टुवर्ड्स अदर्स, ठीक है। सो सबसे पहले यहां से चालू होता है, ओके। सो फर्स्टली यू हैव टू बी राइट, between right and wrong you have to be moralistically upright, ठीक है। then you also have to know, you have to know about जो whatever there is to know, जैसे जीडी में चल रहे हैं तो जीडी में आपको टॉपिक्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, पीपीडीटी में चल रहे हैं तो आपको स्टोरी राइटिंग के अराउंड जानकारी होनी चाहिए, पिक्चर क्या आई थी वो जानकारी होनी चाहिए, क्लियर कट, ठीक है। यू शुड बी द मोस्ट एक्यूरेट पर्सन, एंड देन फाइनली द डू पार्ट कम्स इनटू द पिक्चर, ठीक है। on the basis of all of this you have to put it into action in the testing process, ठीक है। so be, know and do, ये तीन चीजें याद रखना, ठीक है। मोस्टली इन तीनों में से कोई एक ही आप गड़बड़ कर रहे हो, फाइन। कि जैसे फ्रेशर्स जो होते हैं, रिपीटर्स जो होते हैं, रिपीटर्स का जनरली जो बी वाला पोर्शन है ना ये दिक्कत दे देता है, दे आर आइदर नॉट ड्यूटीफुल, नॉट रिस्पेक्टफुल और नॉट टू अ सर्टेन एक्सटेंट नॉट लॉयल, इसमें होता है, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रेशर्स को आते हैं ना, तो फ्रेशर्स को नो वाले पार्ट में दिक्कत होती है, जो ये दोनों चीजें रिजॉल्व भी कर लेता है ना वो डू में मार खा जाता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ प्रेशर, ओके। सो ये सब चीजें थोड़ी सी ध्यान रखनी है। एनीवे, सो हु इज अ पर्सन, हु इज द काइंड ऑफ पर्सन हु वुड गेट रिकमेंडेड इन अ जीडी, क्या वो सबसे ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन है होना चाहिए? तो यार देखो बैलेंस होना चाहिए तीनों का, बी नो डू का, फाइन। जरूरी नहीं है कि आपके पास 100% नॉलेज हो, लेकिन आपका एटीट्यूड ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। टीम वर्क के अराउंड आप काम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, दैट मैटर्स, फाइन। सो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड, एंड दिस इज व्हाट जीडी इज ऑल अबाउट। इट्स नॉट अबाउट स्पीकिंग द मोस्ट, आई मीन लोगों को मिसकंसेप्शन होता है, कुछ यहाँ पे प्रेजेंट है स्टूडेंट्स जिनका ये एक्सपीरियंस रहा है पिछले सेशंस में कि उन्होंने सबसे ज्यादा बोलने की कोशिश करी है, बट ट्रस्ट मी इट बैक बाइट्स, ठीक है। सबसे कम भी नहीं बोलना है, फाइन। सो
थोड़ा बोलना है लेकिन काम का बोलना है, ठीक है। जब आप बोले तो सब सुने। अगर आपके ऊपर लोग बोल रहे हैं ना, तो डेफिनेटली देन यू आर not being a good leader. Fine, you are not getting accepted by the group. Getting accepted by the group as a leader is crucial, ठीक है। उसके लिए आपको थोड़ी इज्जत कमानी पड़ती है। फाइन, तो इज्जत कमाने के लिए आपको अपनी जगह पे सही होना होगा, ठीक है। आपको सही नॉलेज प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। सो मेरी बात समझना, इट्स अबाउट गेनिंग रिस्पेक्ट। सैन एंड्रियास कई लोगों ने खेला होगा, ठीक है, तो मिशन अकॉम्प्लिश करने पे रिस्पेक्ट बढ़ती थी, जाहिर सी बात है, ठीक है। सो उसी तरीके से यहाँ पे भी चलता है। सो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड, इट्स नेवर अ टेस्ट ऑफ नॉलेज, इट्स अ टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है। हाउ डू यू कम अक्रॉस टू द होल ग्रुप। आई होप दैट पार्ट इज अंडरस्टूड। जीडी के लिए मैं क्या बात बोलता हूँ ना सबको, देखो कुछ लोग कहते हैं कि सर कम्युनिकेशन स्किल्स मेरे अच्छे नहीं है, मैं बोल नहीं पाता। सो टू देम आई से कि जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में ही बोलो। फाइन, कई मोस्टली आपको इंग्लिश में बोलना है, ठीक है, बट कई बार एग्जैक्टली रिस्पेक्ट प्लस है ना, मिशन पास रिस्पेक्ट प्लस। सो मोस्टली आपको इंग्लिश में बोलना है, ठीक है, बट कई बार क्या होता है कि कुछ थॉट्स हमें हिंदी में आते हैं, है ना, और उसको ट्रांसलेट करने में ना इंग्लिश में पता नहीं मतलब अर्थ, लाइक यू नो, मतलब इंसान से वो एलियन बन जाता है वो थॉट, वो पता नहीं चलता है। सो इंग्लिश की जगह में करने की जगह हम उसको हिंदी में ही रख, एक वो कहा सॉरी मुहावरा हो गया, कोई कहावत हो गई कोई, ठीक है, कोई इस टाइप की चीज हो गई जो सब सब कनेक्ट कर पाए, ठीक है। सो एक सेंटेंस बोल के वापस आप इंग्लिश में आ जाए, ठीक है। सो कोई झिझक नहीं करनी इसमें कि हो मैंने तो हिंदी बोल दी, वो ये, है ना, इट्स नथिंग लाइक दैट, राइट। इनफैक्ट जब आप हिंदी के कुछ वर्ड्स यूज करेंगे ना, तो इट गिव्स अ बेटर इम्पैक्ट ऑन जीडी, फाइन, ऑन द ओवरऑल ग्रुप, ठीक है, बिकॉज इट ब्रेक्स द मोनोटनी। फाइन, सो दैट इज, अब ये मत करना कि सारे हिंदी में ही बोलने लग जाए, है ना, कि अरे भाई तू वहां पे मिलना, है ना, डोंट डू दैट प्लीज। डेकोरम हैज टू बी मेंटेन्ड। मेजरली इंग्लिश में कम्युनिकेट करना है, समटाइम्स यू कैन स्विच ओवर टू हिंदी, यू हैव टू स्विच बैक टू इंग्लिश एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। डिस्कस ऑल लीड्स, फाइन, स्टिक टू द टॉपिक। अब साइंस एंड टेक की बात चल रही है, किसी पर्टिकुलर डिजिटल इंडिया की बात चल रही है, तो डिजिटल इंडिया में हम पीएम जन आरोग्य योजना में घुस गए, ठीक है। अब जन आरोग्य योजना को हमने मेन टॉपिक बना दिया, वो दिक्कत होगी, ठीक है, समझ रहे हो। पीएम जन आरोग्य योजना, स्टिक टू योर लीड। यार देखो, इट्स अ डेफिनेटली फॉर्मनेस की बात करिए ना हमने, फॉर्मनेस जरूरी है, ठीक है, स्टिक टू योर ओन लीड आप कह रहे हैं, but it is coming out in a it might come out in a negative manner that you are not being open minded, ठीक है। दूसरों के पॉइंट्स भी सुनने हैं, यस। फाइनली देखो आपका क्या है ना थॉट प्रोसेस, कि इनिशियली आपने कुछ सोच के एक पर्टिकुलर लीड सिलेक्ट करी थी, तो जो थॉट प्रोसेस थी ना उस पे उसको हाईलाइट करने की कोशिश करो थ्रू आउट द जीडी, ठीक है। डोंट ट्राई टू स्विच लीड्स वेरी फ्रीक्वेंटली, ठीक है। बट ओकेजनली आप क्या कर सकते हैं, दूसरे के पॉइंट पे बोल सकते हैं, जस्ट टू एड ऑन अ फैक्ट, जस्ट टू आई मीन यू नो डिस्प्ले टीम वर्क, जस्ट टू डिस्प्ले टीम वर्क, ठीक है। बट कंक्लूड आपको इसी पे करना है, हाउ एवर माई लीड इज करेक्ट बिकॉज ऑफ दिस लॉजिक, है ना, इट ऑलवेज हैज टू बी ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ लॉजिक। जैसे हमने पिछले सेशंस में देखा है, शेखर और रविंदर का काफी हीटेड वो हो गया था, है ना, लाइक यू नो डिबेट एंड डिस्कशन। तो वो दोनों अपना पॉइंट को हाईलाइट करने की, दूसरे के पॉइंट को टर्न डाउन करने के बजाय, दूसरे के पॉइंट में फ्लॉ दिखाने के बजाय, व्हाट दे वर ट्राइंग टू डू इज दे वर ट्राइंग टू हाईलाइट देयर ओन पर्सपेक्टिव इन अ बेटर मैनर, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे लीड को के शॉर्टकमिंग्स नहीं बता सकते, वो भी अप्रोच फाइन है, बट इट शुड जस्ट नॉट बी ट्रिगर्ड एट वन पर्सन। किसी एक स्पेसिफिक इंसान की तरफ मैं उंगली करके बोलूँ ना कि भाई ये बंदा गलत है, वो गलत होगा, ठीक है। लीड को मैं गलत बता सकता हूँ, इंसान को गलत नहीं बताना, ठीक है। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। ओके, स्टिक टू द टॉपिक, फाइन, be firm on your lead, right? No need to arrive at a group story, arrive at consensus.
ठीक है. So these are all things that you have to keep in mind. That being said, guys, let's now move forward with the GD topics. ठीक है, ग्रुप डिस्कशन. ओके, सो यार एक चेस नंबर असाइन कर लेते हैं फटाफट से सबको. ठीक है. अच्छा, हु ऑल विल नॉट बी पार्टिसिपेटिंग, प्लीज जस्ट रेज योर हैंड. ठीक है, संध्या, these 5 people are there. फाइन, नाम ले लेता हूँ इनके मैं. और यही 5 रहने चाहिए एंड तक. ठीक है, सैम, अब्दुल, उमंग, महिमा एंड संध्या. ठीक है, चेस नंबर से पता नहीं चलता. अच्छा, ठीक है. 4, अच्छा 4 हो गए ये. भाई कीप इट फिक्स्ड है ना, keep them raised throughout the session. Fine. So we have 5 people who will not be participating. Rest 26 में तो 5 गया, 21 बचा ना. हाँ, तो ठीक है, 2 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, 10 का 11 का. ठीक है, एंड वी विल हैव 2 GDs over here. Okay, चलो. So starting off with Aman, then we have Aman SSGK. Fine. Amar, Amit, Anjali Sharma, Anjali Yadav, Aryan Rai, Devanshi Sharma, Deepti Shukla, Govind Maheshwari. There are 2. Acha, okay. Then we have Mahima and Manish. Just a second, guys. Okay. Right. So दोबारा से स्टार्ट करता हूँ. अमित वल्दिया मिसिंग. नहीं, वेट, अभी आया. यू जॉइन लेट है ना. चलो, so we'll start off. We have firstly we have Aman, then Aman SSGK, Amar, Amit Waldia, ठीक है, अंजलि शर्मा, अंजलि यादव, आर्यन राय, देवांशी शर्मा, दीप्ति शुक्ला, गोविंद महेश्वरी, महिमा. महिमा इज नॉट पार्टिसिपेटिंग, सो गोविंद महेश्वरी के बाद मनीष है. ठीक है, मयूर, नम्रता, नवीन, निखिल, नीरज, प्रियांशी, सत्य प्रकाश, सिड, सुपाली, एंड देन फाइनली वी हैव वंशज. ठीक है, सो दिस इज द ऑर्डर, राइट गाइस, एंड इसको ध्यान में रखना है. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पर्सन विच इज अमन, एंड कहाँ तक जाना है, मनीष तक. ठीक है, वी हैव द फर्स्ट ग्रुप. मनीष तक नहीं करो, इसे दीप्ति गोविंद तक कर लो. ठीक है, सो अमन से लेके गोविंद तक फर्स्ट ग्रुप है, एंड फ्रॉम मनीष टू वंशज वी हैव द सेकंड ग्रुप. ठीक है, अभी मैं टॉपिक दे देता हूं आप लोगों को. मनीष से आई डिड नॉट से एनी नंबर, आई डिड नॉट गिव एनी नंबर यार. ठीक है, Manish is group 2. With this Priyanshi Rathore. So Priyanshi, have we talked before? Yes, so Priyanshi Rathore, that group. अच्छा, it's been a while यार. Yeah, I used to join the session. Yeah, it's been a while. So क्या, what are you doing अभी आजकल? Nothing, so actually my degree is going on from the university. Okay. And other than that, I'm working as an instructor as of now. Inspector? That's interesting, yeah. No, not an inspector, it's Okay. an instructor, swimming instructor. अच्छा, okay. That's nice. That's nice. Yeah, चलो, we'll connect after the session. Alright, Priyanshi. yeah. Okay. ठीक है. Alright, guys. So the topic for today, for the group, for the first group, is how is G20 creating a major impact? Is it through governance? Is it through diplomacy? Or is it through energy? I'll repeat the topic. How is G20 creating a major impact? Governance, diplomacy, or
energy. ठीक है, cameras have to be on and you guys can start. Gentlemen, from my point of view, G20 G20 is it has been impact on G20 by diplomacy. Like we have seen that how our minister, foreign minister has its impact on all over the world. Like we have seen in the like we have seen in the recent meeting that Turkey has arrived in the Jammu and Kashmir. I agree with you, Aman. We are really doing I'm agree with the Aman, and we are really creating an example with the diplomacy as we have decided to conduct 200 meetings in a year in our presidency. So we'll all step to set a good example for the world. I totally agree with the former speaker. As we all know that how G20 is a stepping stone for diplomacy for the further talks on governance and energy. I believe that recently India organized the Voice of the Voiceless and the meeting of the South Asia where the large amount of participation happened, and it's happened just because of the diplomacy, which is the furnishing step for the future. Yeah, exactly. I had a yes, and recently we have held the defense minister and the foreign minister meetings as well, and we have seen how our foreign minister had uh, uh, replied to If you see the that the India Pakistanis past history that all about of the group. when India connected with the various structures G20 and Quad and I2EP, then India performed very well by the diplomacy. And apart from the diplomacy, India is good in energy as well as a good governance. So if you main focus on the diplomacy region, so I think that the energy sector as well as the governance sector is also. Yes, gentlemen, if you talk about energy, then it was recently on the news that India has become the largest supporter of the energy to the Europe. Yeah, and if I talk about the diplomacy, apart from the G20 countries, we have also invited so many other countries to join the G20 sessions. So it is the diplomacy which is playing the major role. Yeah, Yeah, exactly. I don't want to add the much, but yes, G20 has in diplomatic relations, and India also had the policy of Vasudev Kutumbakam, and it is followed by the whole world now today, as India is also heading the G20, and in the various cities of India there are the group meetings held, and different ministers of every country are of the participants of G20 are arriving here and having the diplomatic relations. The G20 logo, that logo consists of 7 petals of the lotus, which says that all 7 continents are equally equally participant in this G20. So Friends, if you talk about the diplomacy of India, if you talk about the diplomacy of India in the G20, so you see that the 200 meetings as earlier highlighted, as well as the 7 all continents come together. But if you see that the G20 summit, in the G20 group, that the developing as well as the developed both countries are together, and India know very well that if our world is pursuing in a good direction, so we will collaborate with the developing as well as the developed countries to make a healthy world and peaceful world. Gentlemen, moreover, India is acting like a bridge connecting the developed and the developing countries. Moreover, in the present scenario of Russia-Ukraine war, India is also acting like a peacemaker in the world. Yeah, totally agree with you. As we know that as we know that the war is going on between Russia and Ukraine, and we know that how USA is imposing sanctions on Russia. So it is a example of diplomacy of our foreign minister that it combined it took मतलब पास लाया उन्होंने two foreign ministers of Russia and the foreign minister of USA. And to add to the diplomacy sector, I would like to add, if our diplomacy is strong, we'll be able to connect all the countries, and we can work on the 4 sectors like climate change is a very crucial topic these days. So if we have strong diplomatic relations, then we can work together for the betterment of the Indian diplomacy. Having diplomatic relations and the governance
And hence now this that the foreign India's diplomacy acts as a bridge between the East Asia, East and the West world. So I think that the India's diplomacy relation with the countries in the G20 as well as the apart from the G country nation, it's work in a strong part. And if you talk about the other leads, that the energy sector and the government sector. So if we have a good diplomacy and the foreign relation, so I think that the energy exchange and the installation of energy in India as well as the other part of the world, other countries also help, and the governance. So exactly, we will never forget about the governance, because any country make a good diplomatic relation, so by the governance. But the diplomacy, yeah, I agree with the formal speaker. As we have working on our solar alliance concept, like we are installing the solar plant to reduce the climatic condition. So we are in the direction that producing the renewable energy. Yeah, at one point India adopted its year long presidency on 30th November 2022, and it will continue till 1st December. Our representative, that is our CEO of NITI Aayog, that means that how India organized the G20 meeting suffering from 3C, COVID, climate and currency. We all know that how the South Asian nation, which are the developing nations suffering from the balance of payment crisis, are able to create a space in G20 for de-dollarization of currency, sanctions and many more. And India became the first nation who swiped or did the rupee to rupee transaction with the Singapore. So I believe that diplomacy is a stepping stone for all the problems. Yes. Yeah, but from I totally agree with you. It also shows the helping nature of India. Like we have seen how India helped Turkey and also helped Sri Lanka in their crises. If you see that nearby all the G20 countries, India install energy as well as have a good relation in the various sectors. You take the America, Canada, as well as the Singapore, as the previous speaker also highlighted, Philippines. That all G20 countries have a good relation with India and exchange their energy because of the strong foreign diplomacy. And apart from this, you never forget that Mr. Shashank, former foreign minister, also visited each and every country for make a better relation with at present as well as in the future also. Not only India, but many countries are also starting to use rupee as a currency for the exchange. And this will be helpful hereafter also after G20. More countries will be joined using a diplomacy for using rupee as a currency. Yes. Recently, with Russia, we have made a deal to exchange. We have made a deal to do the exchange in rupees. And if we look at the China angle, then we really need to develop good diplomatic relations with the other neighboring countries in Europe and America to be in a better position in the future. Yeah, here diplomacy is a base, and with the other relations as well. And gentlemen, so here diplomatic relations as a base, and the energy sector is also main focus of G20 countries, as in not only energy sectors, but we are heading towards the more environmental degradation. It needs to be controlled through renewable energies. So it is also a main reason that G20 countries are main focusing on. Yeah, exactly, gentlemen. And if you highlight, as a previous speaker also talk about the UPI. So in the G20 group, 11 countries start UPI exchange in rupee with India because of India's foreign diplomacy. Apart from this, that they install the pharmaceutical products of India as well as the energy sector also, and we never forget the Solar Alliance also, because India is a founding father of Solar Alliance and all the G20 countries contribute it. Because and that COP 26 and COP 27, Panchamrit and the 7 steps which are taken by the government of India, also all countries are appreciated. Because of foreign diplomacy, they know very well that India takes a good initiative and we will participate in. And I would like to add, if we'll have a good diplomatic relations, like us, we'll take the Australia. We have recently seen that Australia is setting up a university in the Gujarat. Then this is because of we have a good diplomatic relations with the Australia, and it will enhance the investment in the country. So I believe diplomatic relations
strong diplomatic relations are really need. Really. Yeah, I agree with you. main As purpose of the as we G20. know that we don't have a good relationship with Turkey as because of the Kashmir issue and also of the Pakistan. But yeah, India creates an impact by helping Turkey, and also we have seen in the recent examples like in the Kashmir, they have. The Operation Dost for the humanitarian assistance for the Turkey, a step to build a diplomatic relation with the other countries as well. Yeah, that's the As we example all of know good that- diplomatic relations, good diplomacy. Yes. As we all know, that how India is always a supporter of non-alignment. Seeing the recent scenario, I believe that G20 providing India a multi-faceted opportunity to cooperate with other nations, those who are foe or friend both. Not only to cooperate, but at the same time come on the same file to cooperate and communicate with each other to strengthen their diplomacy. Also, diplomacy to the other countries will help for the enemy to counter the enemy countries such as Pakistan and China. So the G20 presidency of G20 is developing a good relation with diplomacy for countering this country. And friends, अगर हमें किसी कंट्री के साथ अच्छे रिलेशन बनाने हैं, so we work upon the three C's, that is collaboration, coordination, and cooperation. So all the things are comes in by the foreign diplomacy, because you see that if we have a good foreign relation, so these things are working over it, and we make a good relation. I would like to highlight another perspective, since most of you are going with diplomacy. So here I would like to bring into the picture the governance. So when we talk about governance, so governance is about, when we talk at the G20 level, so it's global governance. So for that we need to understand what are the topics of global governance. So majorly what are the key issues around global governance currently is the climate crisis, the recovery through pandemic, the drive towards renewable energy. So I think if in these three perspectives India can perform well. So I think diplomacy we can, because diplomacy is before we are good in any relation, what we need to do is come as the topper, or what I would like to call as the हमें best करना पड़ेगा in perspectives में, these three points of view. So I think diplomacy is a sub part of governance. If we focus on governance on the global level, since we are trying to lead the global south, which is the developing nations, right? So I think if we perform good in these three levels, so we would have a good diplomacy with others, because other countries will automatically seek our help, as has been the case with the Southeast Asian nations. Please continue. Yeah, exactly. But I think that but the diplomacy relation is good. So I think that the climate change, COVID, and the renewable energy comes together, because if we have not good relation, so I think that how can all the countries come together to work? If you take an example of Turkey, that earlier the Operation Dost, the relation between India and Turkey is not good. But after the Operation Dost, that the relation, the Turkey mold up toward the India and take friendly steps toward the India side. As I totally supporting the sir that how these global south people don't have voice in the UNSC. For that, G20 is providing an alternative space for all those nations who have large amount of population, but they don't have representation or voice in the international arena. As we all know that Vanuatu, which is one of the Polynesian country, come up with the great idea of non-proliferation treaty for climate change, but they does not get much attention just because of they are not strengthened country or have the participation in the international area. So I believe G20 also using for as a governance to come up with a strong partnership with the help of diplomacy and energy, renewable energy, to come up with a more future advancement. All right. So Yeah, totally agree with you. And also there. Yeah, please go ahead. Yes, please. Yeah, and as we know that, sorry sir, I forgot my point. And I would like to add, governance is, we need a good governance, but to become a self-reliant, we really need to have a good technology transfer from the developed nation, and for that we really need to have a good diplomatic relations, so that we'll have a good technology transfer, and that
will help us to become a self-reliant in the Okay, future. I would like to highlight that with the help of an example here. So, sorry, Aryan, I'll get back to you in just a moment. So, we're talking about governance. So just take a very recent and very contemporary example, which is of our current Prime Minister. So, Mr. Narendra Modi, who was initially the CM of Gujarat, he did well in Gujarat. He was able to provide good governance in Gujarat, and due to that reason, he eventually went on to campaign as a PM and got elected as a PM. But what was the criteria to decide his performance? It was how he governed the territory of Gujarat. So I think taking lessons from that example, I think India can become a global leader only on the basis of governance. So if we can highlight the major issues and like I highlighted previously, and if we can perform in them, so G20 leadership or global leadership task can be assumed by India. So I think governance has the most major impact. Handing it over to Aryan. And some months the ago, point that G20 was basically formed with the views to check global financial security, climate change mitigation, and other points. As India is hosting this year G20 year-long presidency, so other countries will look forward to India to solve such problems, which will definitely give boost to its diplomacy as well as its governance. yeah, due to good governance and diplomacy, as we know that the most of the members that we have invited in our G20 meeting is not a member of G20. So I think that due to the good governance as well as diplomacy, they are coming to India for the G20 meeting. Exactly. As a sir about that the G20 and that the good governance work upon the climate change, COVID and renewable energy, right? And the other is also highlighted about the formation of G20 on the behalf of the financial crisis and the climate change. So, but I think both good governance and the G20 concepts are almost similar. And if you talk about the diplomatic perspective, so if the relation is diplomatic is good, so the moral theme of the G20 is that the financial crisis as well as the climate change. So the automatically the things we did in the good governance, so the G20 motto is already done, because if we have a global in charge of G20 summit, so that the main formation agenda of the G20 is automatically solved. As many previous speakers have mentioned that the G20 is a very good platform where the many political leaders can come up and can discuss their need, their country's need, or the things with other countries, their friends or foe. So it would be a very it provides them a chance so that they can make a diplomatic relation. And as the governance is considered, if a political leader do not know that what other country wants, that what other nations require from us, so here the G20 is providing us a platform. Yes, good diplomacy relation with another country will create a good governance, and hence, because of a good diplomacy relation, majority will increase, and of course, G20 is helping for the same, because majority always wins. And I believe governance and diplomacy, they go hand in hand. If we have a good governance, then obviously we are all set to set an example for the world, and having a good diplomatic relation will enhance our good relations with the country, and which in turn give us the more investment, and we can learn from the friends. Yeah, exactly. As G20 focuses on major global economic issues such as international financial stability and sustainable development, and many more like climate change. So here governance role is main, and of course diplomacy also played a great role here. Yes, diplomacy has always been a prime focus for India, because India has aligned itself with various organizations such as ASEAN and other G20 also, and many other organizations also, because diplomacy has always been a major focus for India. As our foreign minister, as Shashank said, that UK's problem is UK's problem.
but others' problems are not UK's problem. That wants to show that how India used governance in G20 as a platform to counter terrorism, infiltration, and radicalization of several on the basis of community. So I believe that governance is something where we created the opportunity to take steps for terrorism, because terrorism does not have any kind of religion, and not India is only impacted with it. All the nations and all the worlds are impacted by this. So I think G20, with the help of G20, governance is something used as a tool to counter terrorism. Alright, so in order to understand what governance is, let's first of all take a look at the basics. So governance is basically the act of governing a group of people, right? And it is done through realizing their problems and providing solutions to them, right? Yes, So if as Aryan had earlier highlighted, that G20 is a global platform which brings together the 20 biggest economies. So I think the 20 biggest economies also contain the majority of the population of the whole world, and the problems of this population are the problems of the world. So I think if governance, so the question is, the topic is that how G20 is creating a global impact. So I think by through highlighting these issues on a global level, I think that is how G20 is creating a global impact. Yes, sir, totally agree with you. As UN is losing its relevance, as we know that G20 is how G20 is showing its presence in the today's world. Like 20 biggest economies and the 20 biggest, like 85%, 60% of the population who held the G20 meeting. Yes, gentlemen, upon your points, I would like to add that G20 as of now accounts for the 85% of the world's GDP, 75% of the world's trade, and 60% of the world's population. So India, with the help of G20, can make a major impact in the world in order to solve various problems and to further help India to diplomatic relations with other countries. I also support that governance. India can through G20 can support the governance thing, because we know that the primary role of G20 is to push the world towards renewable sector, or to financially make this world stronger, and the diplomatic thing is the secondary thing. We know that side by side diplomatic meetings are being held by. So but we have to notice one thing, that if India wants to become a global leader, then it needs to push the world towards financial security, or it needs to deal with the climate change or sustainable goals. So I believe that India can push the governance issue in the international level. Alright, so ladies and gentlemen, I think as you know, majority of the points are covered, and it's been more than 20 minutes since this GD has been going on. So let's move on to the second group. I hope that you guys are able to just understand the gist of like what needs to be done, right? Taking into consideration whose participation was significant. We have Aman, Devanshi, Anjali, Aryan, Govind, and yeah. So these people had a significant contribution. There are avenues of improvement, which is like, see, pay very close attention to what the topic is asking. Okay? The original topic was that how G20 is creating an impact. Okay? And we went along the lines of international relations. Okay? So whatever point you contribute, it should come back to answer the original topic, right? And it should connect to a lead, connect to any particular lead, right? So there was Deepti was also there, right? Deepti and to a certain point Mahima thi. So Mahima का तो clear cut था, but Deepti का ये नहीं समझ में आ रहा था, बोल रही थी. So that what लास्ट में रिव्यू भी होगा तुम लोगों का, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड, आप लोगों का भी होगा, ठीक है. सो प्रॉब्लम ये आ रहा था ना कि जैसे व्हेनेवर शी इज स्पीकिंग, सो शी इज गिविंग करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है, बट इट्स नॉट क्लियर एज टू विच लीड इट इज गेटिंग कनेक्टेड टू, फाइन, इट्स नॉट कमिंग आउट वेरी क्लियरली, बिकॉज आफ्टर अ पॉइंट क्वाइट फ्रैंकली सब लोग करंट अफेयर्स ही दे रहे थे,
ठीक है. It was not getting connected back to the original leads, fine, or the topic itself. So whenever you are giving any point, so keep the topic in mind, ठीक है. इसलिए 2 बार बोलता हूँ मैं, 2 बार ना सुन लेना है बहुत अच्छे से, मेमोराइज कर लेना है, ठीक है. और जो 3 लीड दे रखी है उन्हें भी बहुत अच्छे से समझ लेना है, ठीक है. तो पॉइंट क्या है कुल मिला के, what my perspective was, I was trying to give you guys some opening, जैसे जो गवर्नेंस वाले, I know this topic was a bit knowledge based ज़्यादा था थोड़ा सा, इसलिए सबका पार्टिसिपेशन नहीं आ रहा था. I can understand, that is why, so knowledge तो मेरे को भी ज़्यादा नहीं थी, ठीक है, because I've also it's been a while since I've been in touch with the current affairs, but what I try to highlight here is that you can go back to the basics, ठीक है. गवर्नेंस के बेसिक्स पे जाओ, पहले टर्म का मतलब समझो, उसको G20 के रिस्पेक्ट में हाईलाइट करने की कोशिश करो, बस दैट्स इट, ठीक है. इफ यू कैन गेट दैट डन, so people will start supporting you with facts and figures. Okay, I hope you guys understand. Yes, Avinash. Alright, so Anjali was there and these people were there, fine. So Anjali का participation is okay. Deepti needs to improve a bit. थोड़ा सा Devanshi was a bit, you might come across as if you're blocking the GD, ठीक है. Aryan participation थोड़ा सा और बढ़ सकता है, ठीक है. थोड़ा सा at a point it felt as if you were lost. I have asked you to be a bit more precise. इसका मतलब ये नहीं है कि आप participate ना करें, ठीक है. You go back to your natural state. So please do that. Okay. Okay, sir. Alright. So एक जो balance है ना, balance create करने की वो है. Right. Anjali, not Anjali Sharma. Anjali Sharma. Okay, you also participated, na? Yeah. So you need to participate a bit more. Anjali Sharma. Yes. I was talking about Anjali Yadav. Okay. शिवम ठीक है, ठीक चल रहा है. थोड़ा सा एग्जाम्पल्स और यूज कर. फाइन. अमन, योर पार्टिसिपेशन वाज आल्सो ओके एंड बैलेंस, ठीक है. ओके, मूविंग ऑन. सो टू द सेकंड सीरीज, टू द सेकंड ग्रुप. द टॉपिक फॉर यू गाइज, व्हाट डू यू वांट टू गो विद? सोशल टॉपिक या नॉलेज बेस्ड टॉपिक ही करना है? सेकंड ग्रुप सर नॉलेज बेस्ड. नॉलेज बेस्ड. Knowledge based, sir. ठीक है सर. Knowledge. Social topic. Okay. So the major issue in today's era is climate change, war, or any other issue. I'll repeat the topic once again. The major issue in today's era is climate change, war, or any other issue. You guys can start. So friends, according to my point of view, we can see that ongoing conflict of Russia and Ukraine has created a lot of challenge. So according to me, war is the most important aspect within they live. So as of now, we can easily see that climate change is the biggest issue because war is fighting. But the climate change is the issue that we have to cooperate. Friends, let me highlight the IPCC report. We look at the climate change is concerned, it is definitely an issue. But see friends, I have an important point to make here. Like climate change is definitely an issue, but it is not impacting our human in direct terms. Like if we see the war which broke out in last year, it has created so many economic breakdowns and supply chains were disrupted because of that. And so many people are moving all over. We have the example of the countries right now. If you look at For example, Palestine was facing some issues like that. Even Afghanistan has been trying to create some war-like situations in neighboring countries. This completely depicts that war has been a major or central issue since the last 5 years. Friends, let me just highlight the IPCC report which states that global temperature is the internal war if we look at talking about the climate change. Climate change can only be resolved GSK also. Major issue is the polarization. I think the ideology of the nations are the major issue in today's world. Destroying the whole world
when it comes to the Antarctica region, we have seen that Doomsday Glacier, it is already erupted in that region, and it is almost And gentlemen, talking about climate change in Delhi, we know that there is very poor air quality index, because of which the older people found it very difficult to breathe. So according to me, I would like to add a point. In the current scenario, there are a lot of issues, except war and climate change, like our Asia, Afghanistan, Pakistan and Myanmar have political stability issues, and in Iran also. However, if Friends, as Neeraj has pointed out that that has been going on. The climate change is not impacting us direct way. We have the example of China and Pakistan, where because of the flood-like situation, the economy was completely shattered. So which shows that it is very yes, I agree with the former speaker. It's not like the addition of India and whether it is of See, India we or have many Iran. examples as of now. like war, there are climate change is important as I the prices of oil has soared up. I think war is a major Because of the war, the government is getting devastated. And it impacts the climate change also. In my opinion, I think the internal disturbance in the country are the major issues which today's era is facing, because we have already witnessed the situation of Manipur, and we have also witnessed the situation in Sudan also. We have also seen the same examples in Afghanistan, where people were dying and killing each other. So I think the internal disturbance, or we can say I think the major issue is related with the ideology. Like we have in the world, there is a creating of polarization between the nations. There is in Pakistan, Imran Khan narrated, and political instability is clearly seen in Pakistan. And if we took an example of Afghanistan, there is Taliban is there. I think internal dispute is also Guys, shouting is not the solution. gentlemen, according to me, Hold on, Nikhil. Just a second. Gentlemen, shouting is not the option, right? And cooperation is. So kindly just let's participate in an orderly fashion, right? So please, I can see that there are 4 people speaking at a time. Okay, so there's no point creating a traffic jam. If you guys are sensible, then you would try to resolve it somehow. ठीक है, लोग देख रहे हैं कि 3 बंदे बोल रहे हैं, उसके बाद भी एक और बंदा एडिशनली उसके, despite seeing that 3 people are speaking, you're speaking over them, just shouting, doesn't make any sense. ठीक है, so kindly be mindful and see who else is speaking first, right? It's bad, it's rude to interrupt others while they're speaking. Let's start. yes, gentlemen, according to me, there is some other reason for it, that is resource. Because ultimately, the war is there because of resource, and
I would like to Gentlemen, I I would like to say contributed, please let those who have not contributed shine. Then Go to the area and find your device. Powering off. For quite a long time. So please give her a chance, like she has some points. So I would like to say, if a war is impacted, it will impact the climate change also. So, bomb होता है, so it ultimately impact the climate change as this impact on pollution, air pollution, and water pollution also, human resources. yes, I agree with Japani point. I would like to continue Niraj's point. The small issue that we have the carbon emission that is the most important point which is contributing so much to A couple of side level because all the situation it affects almost the world, but look at the if you look at the settings of today's era, we all know that every country is running to be a developed country, but we have already had a many major wars where the world is dividing into parts. We have already witnessed while one of us speak about explaining of dividing the world into parts. So we have already seen the way it was impacting the development of India and the way it was impacting the development of Russia. From there we can understand that how the world is how the war are affecting the life of the humans who are taking part in that war and how the development of And one more thing, I agree with Marie's point, but if you took the root cause, it is ultimately the source of which the nations fight. I would like to point out that all the global organizations who are working towards climate change, who are working towards betterment of the world, they are the only organizations who were initially formed for the peacekeeping or for maintaining the peace in the world. If their original motive is not completed or they are not able to tackle those problems first, we cannot go further with climate change issues. However, we can go side by side with it to completely see that not UN or not any global organization is working towards the war. But gentlemen, according to me, as climate change. So you all are right. Your point of but in the past we have seen that various wars have been fought and they have been stopped. But once the climate change touches one kind of policy, I don't think that's what it is. Something what happens is that climate change is a problem of every other country out there. and I think if there is no device thing is there, we could all over the world, then we can talk about the climate change and other issues. Food crisis. If there is no war, then all the peace and there is no energy crisis. And like there is All right. So with that, let's here we terminate the GT. Fine. Just hold on. सत्य प्रकाश, ये देखो, यही होता है ना? यही होता है जब आप कान बंद करके बोलना चालू करेंगे ना, तो यही होगा, है ना, सबके साथ। और जनरली ये इस ग्रुप में ऑब्जर्व करा जा रहा है। सी क्या होता है ना कि जब आप रोड पे चल रहे हैं, लेट्स से इफ यू आर गोइंग ऑन योर मोटरसाइकिल, ठीक है,
बगल से कोई मोटरसाइकिल वाला आके आप में लड़ने की कोशिश कर रहा है ना, तो यू विल अप्लाई द ब्रेक्स, ठीक है, इन ऑर्डर टू अवॉइड अ कोलिजन, ठीक है। दिस इज नॉट व्हाट्स हैपनिंग हियर। इधर इधर वो वाला भी आके ले, अब तू ठोकेगा मैं और ठोकूंगा तेरे में, ठीक है, दोनों मरते हैं एक साथ, समझ रहे हो? दिस इज व्हाट्स हैपनिंग। सो प्लीज बी माइंडफुल। बोलने के बाद भी यार, दीज टू पीपल, कमलेश एंड ये निखिल, दोनों के अच्छे अच्छे पॉइंट हैं, खामखा जब एक बोलेंगे एक साथ बोलेंगे, ना उसकी सुन पाऊंगा ना उसकी सुन पाऊंगा मैं। और अब ये दोनों खत्म नहीं कर रहे हैं, इतने में नीरज आके फिर कुछ बताएगा, है ना? सो दिस इज नॉट डिजायरेबल एट ऑल, ठीक है। यू ऑल्सो नीड टू बी माइंडफुल एज टू, आप जैन कभी लाइक यू नो एनी पर्सन हु फॉलोज जैनिज्म, ठीक है, सो दे आर माइंडफुल ऑफ वेयर दे स्टेप, नंगे पैर चलते हैं, सो दैट दे डोंट एंड अप, चींटी तक को मतलब चोट ना लगे उनकी प्रेजेंस से, ठीक है। सो अब मैं ये नहीं बोल रहा कि उतने एक्सट्रीम में जाना है, बट यू हैव टू बी माइंडफुल एटलीस्ट, है ना? जब कान बंद करके आप बिल्कुल बोलना चालू करोगे ना, you have lost all senses, only what's working is the mouth, so then you're blabbering and then you're not responding. Do you understand? So you have to respond and you have to contribute and not blabber. Fine, there's a difference. So ठीक है। और देखो क्या है ना कि जस्ट बिकॉज दो लोग आपको बोलने का मौका नहीं दे रहे या दो बंदे ऐसे वो कर रहे हैं, तो टैक्टफुली उनकी स्लेज हैमर लेके उनके पीछे नहीं भागेंगे, समझ रहे हो मेरी बात? कि अब कैसे नहीं चांस दिया, कैसे नहीं चांस दिया, इन्होंने तो मेरे को बोलने नहीं दिया, मैं भी अब इनकी तरह ही बोलते रहूंगा, है ना? दैट इज नॉट द सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन इज फर्स्टली टैक्टफुली डीलिंग विद दिस। लेट्स से अगर कमलेश है, कमलेश को चांस नहीं मिल रहा, तो पहले ही नीड्स टू एड्रेस दिस इशू इन फ्रंट ऑफ द होल ग्रुप। जेंटलमैन, दिस इज व्हाट्स हैपनिंग, फाइन। ओनली वंस एवरीवन म्यूचुअली कंक्लूड्स that you will participate in an orderly fashion, then you guys can move forward, ठीक है। जरूरी है ये चीज करनी है establish, ठीक है। any person who would want to get recommended would not end up colliding with each other, ठीक है। so if you want to get recommended, first thing that you need to do is stop speaking over others, ठीक है। give due respect to others perspectives also, ठीक है। it starts like I said, पहले you have to be a respectful person, ठीक है, then only you will get respect, okay? and this is true, you can, अगर यार एक मछली खराब है तो आप एग्जाम्पल अच्छा सेट करके आप तो ग्रुप के साथ सामने वो कर सकते हैं ना अच्छे से। यू कैन टेक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू कैन टेक द ग्रुप्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट आप अपनी तरफ से तो पूरा निभा सकते हैं ना। जरूरी थोड़ी है कि आपको चांस नहीं मिल रहा तो अब क्या करूंगा मैं कि मैं तो सबसे ऊंचा चिल्लाऊंगा। यू आर डिफीटिंग द होल पर्पस, है ना, एवरीवन हियर, ठीक है। तो दैट वाज द मेजर इशू इन दिस पर्टिकुलर ग्रुप, ठीक है। और लीड्स वगैरह की बात करें तो वो सब तो बाद में आएगा। पहले यू व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फर्स्टली कंट्रीब्यूट इन एन ऑर्डरली फैशन, उसके बाद ही कुछ चालू होगा, ठीक है। सो आई मीन आई डोंट नो व्हाट टू से इसके बाद ना, बिकॉज दिस इज द जो सबसे बड़ा इशू था ना, वाज द बिग एलिफेंट इन द रूम व्हिच नो वन वाज ट्राइंग टू एड्रेस। There was an elephant in the room, and that elephant in the room was that you guys were not acting like gentlemen. Although you were addressing each other as gentlemen, but you were not being like gentlemen. Fine. So you have to be mindful of that. ठीक है, ज्यादा अग्रेसिव होने से ना भी अग्रेशन जरूरी है टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बिकॉज यू गाइज आर गोइंग टू बी फौजीज, ठीक है। इट्स नॉट लाइक अग्रेशन नहीं होगा तो भी दिक्कत है, बट it has to be in the like you know productive aggression towards any particular topic। आप इतना सीरियसली फील कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में दैट आपके इमोशंस बाहर आ जाए, ये नहीं कि एक दूसरे के खिलाफ अग्रेशन दिखाना है, नो, दैट शुड नॉट हैपन, ठीक है। सो आई होप यू गाइज लर्न अ लेसन। दिस इज द वर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर द जीटीओ ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि उसके बाद कॉपी किताब बंद करके ना बैठ जाता है जीटीओ, मार्किंग वगैरह बंद हो जाती है, ठीक है, सबके मार्क्स जीटीओ के 0 हो जाते हैं, ठीक है। सो अंडरस्टैंड दैट, इज इट अ रिस्क वर्थ टेकिंग, क्योंकि सबके 0 हो जाएंगे, असेसमेंट किसी का नहीं होगा फिर, ठीक है। उसके बाद पीजीटी पे आएगा, पीजीटी पे भी आप लोग वही कंटिन्यू करेंगे, तो एक बंदा जो रिजॉल्व कर रहा है ना इसको, उसको नंबर मिलेंगे सिर्फ, ठीक है, 0 से थोड़ा सा पॉजिटिव मिल जाएंगे,
समझ रहे हो मेरी बात? तो यू हैव टू बी दैट पर्सन एंड नॉट द पर्सन हु इज गोइंग टू कोलाइड इनटू अनदर पर्सन, ठीक है? बिकॉज आई फील यार बहुत बंदे थे जिनके पास अच्छे पॉइंट्स थे। ये आईपीसीसी की रिपोर्ट से ओपन कर रहा था ये कमलेश, ठीक है? दैट गॉट दैट केम इनटू द जीडी, बट उसके बाद आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, लॉस्ट हिज सेंसेस और व्हाट हैपेंड, ही वाज नॉट एबल टू सी हु वाज पार्टिसिपेटिंग और व्हाट हैपेंड, बट ही कंप्लीटली लाइक वेंट बैलिस्टिक। सेम गोज विद निखिल, दिख रहा है स्क्रीन पे, दूसरा बंदा भी बोल रहा है, उसके बाद भी बोलना है नहीं, है ना? लेट्स टेक अ वाउ दैट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी विल नॉट डू दिस, ठीक है? इट हैज टू बी टैक्टफुल। हमें एनडीटीवी के जीडी में नहीं जाना है, हमें राज्यसभा वाले जीडी में जाना है, ठीक है? राज्यसभा टीवी देखो जरा, संसद टीवी, ठीक है? सी हाउ दे इंटरैक्ट, लर्न समथिंग फ्रॉम देम, ठीक है? चलो, on that note, I hope today's session was entertaining to say the least, and frustrating to some also, right? And I hope nonetheless you take some learnings, and that is growth is what we aim for. On that note, we'll meet with another session probably next week, or if possible within the this particular week itself. ठीक है गाइस, विल आल्सो बी लॉन्चिंग जीटीओ माइक्रो कोर्सेज, ठीक है? कि जैसे इफ यू वांट टू वर्क ऑन वेरी, यार इसमें क्या सजेशन दूं मैं, ठीक है? किसी का पॉइंट ही निकल के नहीं आया, किसी को इतना ऑब्जर्वेशन ही नहीं हुआ, व्हाट सजेशन कैन आई गिव, है ना? तो जितना सजेशन देना था सबसे पहले मैंने दे दिया, वो सबको ही अप्लाई होता है, ठीक है? एक बंदा चाहिए था मेरे को जो कि आके हु सेव्स द डे, हु मेक्स एवरीवन कोऑपरेट, ठीक है? दैट डिड नॉट हैपन। कुछ लोगों ने ट्राई किया बट ना सुनने वाले बहुत ज्यादा थे, ठीक है? गो इनटू द बेसिक्स। अमन, मैंने रिकॉर्ड करा है ये, आई विल बी पोस्टिंग दिस ऑन यूट्यूब, जस्ट गो बैक एंड यू कैन रीवॉच व्हाट एडवाइस आई गिव, ठीक है? गो बैक टू द बेसिक्स, बेसिक समझो, लीड का कोर समझो, ठीक है? और उसको कनेक्ट करो टॉपिक से, उसके बेसिस पे आप बात कर सकते हैं, ठीक है? एंड हाँ जी, who's there? Sir, is there a minimum number of times one should at least speak in the discussion? यार ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा I mentioned my points quite very often, so it can work as I'm blocking the GD. So हाँ, सी यार देखो, ऐसा होना चाहिए ना, जब आप बोलो तो कुछ नया आइडिया कंट्रीब्यूट करो, दैट शुड बी द गोल, ठीक है? यू शुड नॉट स्पीक जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्पीकिंग, ठीक है? अगर आपके पास कुछ नया नहीं है ऐड ऑन करने के लिए, एवरी टाइम यू स्पीक यू शुड हैव समथिंग टू ऐड ऑन टू द ग्रुप डिस्कशन, ठीक है? दैट इज द, सो थोड़ा सा टाइम लेते हैं, दिमाग में कंडेंस करते हैं मैं क्या ऐड करूंगा इस बार, ठीक है? और फिर रखते हैं बात को, ठीक है? It should not be just reflexive, oh you said this, very nice point, है ना? Just from this perspective, although you can praise, and praising someone's perspective is good, ठीक है? Because that encourages that person to, you will build a positive cooperation, ठीक है? But if that's all you do and you do not participate, you do not contribute, so तब भी दिक्कत है, ठीक है? So understood, thank you. okay, yes, हाँ जी, पूछें फटाफट। Sir, the question regarding over their point. निखिल बता क्या Everyone पूछ? Sir, if everyone is putting forward their points, then we are not getting chance to put forward point. हाँ So in that circumstances, what should we do? यार, एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम फर्स्ट। मेरे साथ ऐसा होता है ना, तो पहले मैं अपना पॉइंट पहले तो गैदर कर लेता हूँ, ठीक है? उसके बाद पॉइंट रखने से पहले ना, व्हाट आई से इज, जेंटलमैन लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही मेरे को एक भी चांस मिला ना, अब 10 मिनट में बस मैं एक चांस ढूंढूंगा और उसमें पॉइंट ये वाला रखूंगा, जेंटलमैन लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीक वन बाय वन, it's been half the GD is already passed and we have not contributed in a decent enough manner, ठीक है? उसके बाद मैं पॉइंट रखूंगा अपना, ठीक है? तो फर्स्ट आई एड्रेस द मेजर इशू, जो मुद्दे की बात है ना, उसको इशू नहीं करोगे, उसको एड्रेस नहीं करोगे ना, तो फिर दिक्कत है, ठीक है? क्योंकि कंट्रीब्यूशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। हाँ जी, बोले, पूछे। Sir, I have a question regarding lecture. Sir, like when I see the topic, then a lot of points coming to my mind. But when I give my lecture, then
प्रैक्टिस मोर। एक टॉपिक पढ़ ले रोज सुबह, ठीक है, समझ ले, उसको समझना है, ठीक है, बिना देखे डिलीवर करने की कोशिश करनी है, ठीक है। कीप वर्किंग ऑन दैट एंड ऑर्गेनाइज योर थॉट्स इनटू सब हेडिंग्स, ठीक है। ब्रॉड पॉइंट्स पकड़ना ज्यादा जरूरी है, ठीक है, रादर देन एनीथिंग एल्स। फैक्ट्स जो है ना, फैक्ट्स, छोटे छोटे फैक्ट्स याद रखने की कोशिश करोगे, नहीं होगा, ठीक है। हमेशा ना कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो, कॉन्सेप्ट कन्वे करने की कोशिश करो, कॉन्सेप्ट्स को छोटे छोटे हेड्स में ब्रेक डाउन कर लो, दैट्स इट, ठीक है, दैट विल हेल्प। ओके, हाँ जी, Sir, I have one doubt. पूछो। Sir, like during GD, what happens? I just get stuck to one kind of like I don't get diverse ideas. Like रीड वाइडर, रीड वाइडर एंड ट्राई टू रिलेट विद योर डेली लाइफ, ठीक है। प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव जितने आपको मिल सकते हैं ना उतना। यार आइडिएशन वाले पार्ट पे ना मेरे को एक ही समझ में आता है चीज, दैट एंड लिसन टू मोर डिबेट्स यार। इट्स अबाउट लाइक यू नो सीइंग अदर्स परफॉर्म। कई बार ना कोई एक पर्टिकुलर तरीका किसी का पार्टिसिपेट करने का हमें चमकता है, ठीक है, और लगता है बढ़िया, तो यू हैव टू गो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, ठीक है। सो पार्टिसिपेट मोर, उससे सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। So like here the third lead was any other reason. हाँ, So if I put forward resource as a reason, so it will be well. चल जाएगा, आई थिंक आई डोंट हैव एनी इशू विद दैट, है ना। गुड थिंग दैट यू आर गिविंग अ वाइडर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, ठीक है, कोई इशू नहीं है। बट इशू उसके पहले है ना, पॉइंट तक तो आपके आए ही नहीं ना, उसके पहले ही मामला गड़बड़ हो गया, समझ रहे हो। सो जीडी इज अबाउट एटीट्यूड फर्स्ट, देन कम्स द नॉलेज, है ना। नोट करा था मैंने, रिसोर्स पे बोल रहा था तू। हाँ जी, पूछो। yes, sir. Sir, seeing others speaking, sir, I feel inferior and used to forget my thoughts. हाँ यार, How to get देखो परसिस्टेंस इज द की, ठीक है। आपको इस चीज पे जज नहीं करा जा रहा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितने बढ़िया हैं, और रादर इंग्लिश कितनी बढ़िया है, ठीक है। देखो कम्युनिकेशन स्किल इज डिफरेंट, इंग्लिश इज डिफरेंट, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल इज एबिलिटी टू कन्वे द आइडिया, ठीक है। अब वो आप हिंदी में कन्वे करो या इंग्लिश में कन्वे करो, इट्स जस्ट अ लैंग्वेज, इट्स नॉट, इंग्लिश इज नॉट कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, ठीक है। व्हाट मैटर्स इज इफ यू आर एबल टू कन्वे द आइडिया और नॉट, ठीक है। बी परसिस्टेंट अबाउट दैट। Any person who has grown his communication skill does not rest until he conveys the idea, ठीक है। 2 बार गड़बड़ होती है, तीसरी बार फिर भी जब तक आइडिया पूरा कन्वे, क्योंकि आप फिर समझ रहे हो आप बीच में गिव अप कर दे रहे हो ना। अगर जैसे आइडिया कम्युनिकेट करते करते आपने अच्छी इंग्लिश नहीं बोली, आपने बीच में गिव अप कर दिया, तो डिस्टॉर्टेड फॉर्म ऑफ दैट आइडिया इज गेटिंग कन्वेड, ठीक है। और उसके बेसिस पे आप जज होगे और गलत जज हो जाओगे, समझ रहे हो मेरी बात। तो फोकस मोर ऑन कम्युनिकेटिंग द आइडिया रादर देन इंग्लिश, ठीक है। यस कमलेश, पूछो। So many people say that while lecturing, you need to keep your hands in the bag. What I generally do is I just also use my hands because It's not. that I can convey more. I understand. Anything that comes to you naturally, do that. It should just not be intrusive, है ना। बहुत ज्यादा you should not rely on it कि जब words खत्म हो गए तब भी आप है ना वो साइन लैंग्वेज में बात करने लगे, that should be the only limitation, ठीक है। otherwise if you are using it in a very controlled manner, ठीक है, it should supplement your speech and it should not replace your speech, that's the only criteria, ठीक है। these sessions are held twice a week, ठीक है, Mondays and Tuesdays, ठीक है। yes Supali, Your point of view, what is the major issue in today's era? what, be a bit louder. In your point of view, what is the major issue in today's era? I think यार see I'm more of an environmental perspective वाला guy, ठीक है, but I can speak on all both the two leads, ठीक है, मैं दोनों पे बोल सकता हूँ।
अब वो मेरे मेरे ऊपर है, मैं किस पर्सपेक्टिव को हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आई फील मोर कनेक्टेड विद क्लाइमेट क्राइसिस, ठीक है, बिकॉज इन द एंड what happens is कि when we are fighting against nature, that is a bigger issue, ठीक है, rather than और दूसरा पर्सपेक्टिव भी कन्वे कर सकता हूँ मैं, fighting amongst ourselves is the major issue, ठीक है। so it just depends on like you know what I want to go with, so मैं उसके लिए points gather करूँगा and है ना, that's not able to hear you. So can we go with both the options? Like there was two options, climate change and war. हाँ, Can we go both of them? दोनों का ओके, दोनों का यार यू शुड नॉट गो विद बोथ द ऑप्शंस, ठीक है। जनरली क्या है कि आप किसी के पॉइंट को सपोर्ट कर सकते हो, फाइनल सोल्यूशन में बात कर सकते हो, बोथ दीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट, बोथ ऑफ दीज, बट प्रायोरिटाइजेशन जो है ना हमेशा करना पड़ेगा आपको, ठीक है, बिकॉज when you have to act on something, let's say if you become an officer, you have sufficient resources to just act on one of the perspectives, ठीक है, then you will have to make a call, ठीक है, so you will have to make a call. फ्रॉम क्लाइमेट पर्सपेक्टिव, यार क्लाइमेट पर्सपेक्टिव में बहुत कुछ बोलता मैं, अभी जल्द झटके से नहीं आएंगे, और वंस आई स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन द जीटी देन ओनली आई विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट, है ना। बट 6 मास एक्सटेंशन में से चालू कर लेता हूँ। 6 मास एक्सटेंशन चल रहा है अभी, इट करंटली अंडरगोइंग एंथ्रोपोजेनिक, दिस मास एक्सटेंशन इज एंथ्रोपोजेनिक, ठीक है, कॉज्ड बाय इनके पहले जो 5 मास एक्सटेंशन हुए हैं, दीज हैव बीन कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्सेस, ठीक है। 6th वाला जो है ये ह्यूमंस की वजह से हो रहा है, ठीक है। फिर ग्लोबल टारगेट्स ये सब फलाने बना, इधर से चालू करता मस्त एकदम चिपकाता, मस्त चमकाता, ठीक है। फिर डेली लाइफ से कनेक्ट करता कि कैसे हम लोग राइजिंग टेम्परेचर्स डे टू डे बेसिस पे देख रहे हैं, ठीक है। सो दैट वुड हैव बीन माय कोर्स ऑफ एक्शन। सर हाउ टू गेट नॉलेज ऑफ द टॉपिक विच इज अननोन, आज दो टॉपिक देखे ना आपने, आज जाके दोनों के बारे में पढ़ लो, ठीक है। इट्स अ स्लो प्रोसेस, एक दिन में नहीं होता, ठीक है। यू कीप पार्टिसिपेटिंग, you read about those topics, next time those two topics come, ठीक है, you make sure that ये दो टॉपिक आज के बाद से ना मेरे वीक पॉइंट नहीं बनेंगे, इसमें आई विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट, ठीक है। दैट्स इट, टाइम लगता है थोड़ा प्रिपरेशन में, ठीक है। चलो, यस महिमा एंड संध्या, यू गाइस आर आस्किंग समथिंग, नहीं, चलो ठीक है। ऑन दैट नोट विल टर्मिनेट द सेशन गाइस, ऑन दिस नोट, ठीक है। एंड यार यूट्यूब पे सर्च कर लो ना, टाइमिंग जरूरी नहीं है देखना, एक बार देख लो, उस पर आपको खुद ही आइडिया चल जाएगा, वहां पे नीचे क्लॉक दिखा रहा होगा, ठीक है, यूट्यूब पे जो रिकॉर्डेड वो है, देख लो एक बार, ठीक है। सनसेट टीवी में कैसे डिबेट्स होते हैं, कैसे डिस्कशन होते हैं ये डाल रखे हैं, गो थ्रू इट यार, गो थ्रू इट भाई यार, प्लीज कम ऑन, है ना, गो थ्रू इट, एटलीस्ट गो थ्रू द चैनल पहले, फिर उसके बाद ऑल द रेलिवेंट डिटेल्स विल फाइंड ऑन द चैनल, ठीक है। चलो, and on that note guys, I'll take your leave, we have other classes as well, so have a good one, ठीक है। जय हिंद everyone, bye guys.